Hi everyone, welcome to OASHUB. I'm Sip Sankar Hazra with you. तो ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯେହେତୁ OPSC ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଅଛି ତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ୟାଟ୍ would be helpful for the OPSC ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ. And so this video is going to also helpful, very helpful to ଏଥିରେ all the topics like ASEAN, BRICS, SARC, RCEP, BBNI, BIMSTEC, IOR, Indian Ocean Region, Gulf Council ଏ ସବୁ ତମର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରହିବ. So that would be very useful for the OPSC and UPSC as well. Mains ପାଇଁ ବି ରହିବ, prelims ପାଇଁ ବି useful ରହିବ. So ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା videos को ଆଗକୁ. Now first ଆମେ ଦେଖିବା ASEAN, time waste କରିପାରିବୁ ନାହିଁ. ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ, please subscribe and like, share and comment କରନ୍ତୁ. ଯାହା ସଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ସଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ. I will accept that humbly. So first one, the ASEAN. Now recently आप लोग देखिए कि ASEAN was established. तो recently बर्तमान कब establish ही नथला. Recently there was the ASEAN session in Jakarta रही थला जोड़ी कि Prime Minister नरेंद्र मोदी visit करे थे. Asian and India with relation यदि हम देखिए 30 years of relation we have established or we have completed. We are having look east and act east policy in 2014 रे हमरो act east policy ऐसी थला. Look east policy that is what हमको policy it is way back to 2002. Look east जोटा कि 2014 रे लुक एक्ट पॉलिसीज रे कन्वर्ट हे गेला केबे एस्टैब्लिश हेतला. आसियान में देखबा बैंकॉक रे हेडक्वार्टर अछि, थाईलैंड अछि, एशियन रो दैट मींस अगस्त हेतला. सो अगस्त 1967 बैंकॉक विथ हमें बैंकॉक डिक्लेरेशन जाको कहाजे है ना, और एशियन डिक्लेरेशन बाय फाउंडिंग फादर कंट्रीज माने के थिले देखा फाउंडिंग फादर दैट मींस द एशियन फॉर द फर्स्ट टाइम इट केम टू एग्जिस्ट इन द 1967 in Bangkok, Thailand. Also called as the what Bangkok Declaration, with the parents members like the Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore and Philippines. So these were the fifth or the five members were there when it was originally established. Later on other countries, Southeastern countries or the South Asian countries, they mix together, they come off and they join, and now they are having 10 members. The objective is that economic growth, peace, security, social progress, cultural development in the South Asian region, in the Southeast Asian region, that is Indo-China region, because this region is also called as the Southeast Peninsula, or this is also called as the what Indo-China Peninsula. This is also called as the Indo-China Peninsula. Here you do Thailand, founding father, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei joined in 1984, 1995, Vietnam, Laos 97 again, Myanmar, Cambodia last to join in 1990. So these are the 10 members जो में कि 10 plus 5 equal to RCEP, Comprehensive Regional Economic Pact. So that means Asian member countries again you can have. This is the Laos, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines. So these are the countries. Okay, they are there. So okay, there are two observer states, namely Papua New Guinea and East Timor. Their capital hoji Dili, D-I-L-L-I or L-I, Dili. So these are the two observer nations are there. Papua New Guinea, jedi taman janna, here is the Papua New Guinea, and what a choose tier country hoji East Timor, Australia ro opare hoji. Now India Asian relations यदि हम देखिए bilateral relation 1990s रे आसीथिला. देन हमर आस्तला कोन act east policy जोटा 2014 रे आसीथिला. बट मु तुमको आ पूर्वरु कहतली जो हमर डायलॉग स्टार्ट हेतला कि इंडो एशियन डायलॉग स्टार्ट हेतला that is 2 रे, that means 2002 रे, that is the look east policy. Okay, now 2009 रे एशियन हम के ट्रेड एग्रीमेंट हेतला, that is the AIGITA तो ये बहुत इंपोर्टेंट. दैट मीन्स हमको एशियन इंडियन ट्रेड रिलेशन 2010 रे एस्टाब्लिश हेतला जोट के आगु को जाई के हमर बहुत बढ़िया हेची. ना हमें देखिबा जति एबे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन मध्ये अछि. India has also comprehensive economic cooperation, that is the SECA. जेमति तमरो ऑस्ट्रेलिया सहित भी SECA अछि, सिंगापुर होती, मलेशिया, थाईलैंड. ये क्वेश्चन भी तुमको पचार परे कि which of the following countries India is having SECA बा comprehensive economic agreement. जेमति तमरो ऑस्ट्रेलिया सहित अछि, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया इमान को सहित SECA अछि. ठीक अछि. तो ये गोटे हमर फ्रेंडशिप चलछि ऑलरेडी. हम कहै 30 इयर्स हमर फ्रेंडशिप को कंप्लीट कर सारछे. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगु को हमें जाउछे. बोथ एशियन एंड इंडिया एडवोकेट्स फॉर द व्हाट सेफ्टी इन द साउथ चाइना सी, navigation and the freedom of navigation in the South China Sea, and
इंटरनेशनल लॉज एंड ऑर्डर को एस्टाब्लिश करने साउथ चीना सी रे एबे तो प्राइम मिनिस्टर निदे जाइछंती नाउ इंडो एशियन रिलेशन रे जदि आमे देखबा जेमते कि ट्राइलेटरल हाईवे कथा नहीं छ जोथरे म्यांमार थाईलैंड एंड इंडिया इस ट्राइलेटरल देन कालादा मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जोटा आमे म्यांमार रे करूचे सेटा मध्ये आसुची देन आमे देखबा रेलवे कनेक्शन करा जाउची जेमते कि दिल्ली इंडिया आम अप टू वियतनाम जाय रहबा गोटे एशियन हाईवे एशियन रेलवे करा जाउची ना एट प्रेजेंट आम देखा 43rd मीटिंग चली जोटा कि मु वीडियो शूटिंग कला बेले आमर जाकर्ता इंडोनेशिया रे तो दैट मीन्स लेटेस्ट मीटिंग आम कह 43rd मतलब मीटिंग चली ओके देन सार्क पाखक आसवा इंपोर्टेंट आम सार्क पाखक आसवा साउथ ईस्ट एशियन आम कह कॉर्पोरेशन और दैट इज द रीजनल ब्लॉक और दिस इज अ रीजनल ब्लॉक दैट इज साउथ एशियन है ना आम कह कंट्रीज मैंने मिसेकी 2005 रे आम कह जदि आम कह सॉरी एक मिनट अफगानिस्तान 2000 जदि तुमको पचारो सार्क लेटेस्ट मेंबर की अफगानिस्तान है ना ओके जस्ट मिनट सो दैट मीन्स हमें 19 आम कह 2005 रे के साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन सार्क 1985 रे आसला 1985 ऑल्सो तुम 52nd अमेंडमेंट ओके एंटी डिफेक्शन लॉ ये तुम मन रखिपर सेक्रेटेरिएट है काठमांडू नेपाल अच्छी तरह काठमांडू ऑर्गेनाइजेशन कोठी होता इट वाज फॉर्म्ड इन ढाका डिसेंबर 1985 काठमांडू हूँ तार कौन सेक्रेटेरिएट अदर हेडक्वार्टर बस ये तुमको इंपोर्टेंट मन रखा पड़ो ना फास्ट के आसला 1985 कौटी आसला ढाका रे हेडक्वार्टर कौटी काठमांडू नेपाल लास्ट मेंबर किए जॉइन होती अफगानिस्तान केबे स्टार्ट है 1985 ना में देखा सार्क मेंबर्स किए अच्छी अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका किंतु 2014 ରୁ 16 पर आज पर्यंत कौन सार्क समिट है ना जहाँ भी तो सार्क एवं थंडा अवस्था अच्छी देन आम देखा ऑब्जर्वर को मैंने अच्छा ऑस्ट्रेलिया चाइना यूरोपियन यूनियन ईरान जापान मॉरिशस यूनाइटेड स्टेट म्यांमार कोरियन एथरू तुम प्रिलिम क्वेश्चन आसी पारे लास्ट समिट के तुमको पचार कि व्हेन डिड द लास्ट समिट टुक प्लेस तो दैट देखा लास्ट समिट मुझे तुमको तो डिस्कस करी पूर्व आउ टिके डिस्कस करदे तो दैट मीन्स सार्क रे कौन रीजनल कोऑपरेशन कोठी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन जहाँ को कहबा विथ सोवरेनिटी वुड बी टेकन गारंटी ओके ना एथर गोटे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन साप्टा साप्टा कहले कौन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2016 रही था सो दैट व्हाट जो कस्टम ड्यूटीज को जीरो करवा जो थे कि इंडिया एंड श्रीलंका आल्सो हैविंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंडर दिस तो यहाँ को टिके तुम लिंक कर ओके ना साप्टा दैट मीन्स केबे आसला तुम 2006 साप्टा प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज इनटू केम इनटू 1995 आसला ये कौन है तुम जीरो अच्छा जीरो कर टार्गेट बाय 2016 किंतु साप्टा आसीला 1995 रे तो ना सार्क केबे आसला 1985 रे ना साप्टा के आसला 1995 10 वर्ष पर ऑब्जेक्टिव कौन था फ्री ट्रेड टू रिड्यूस द कस्टम ड्यूटी जीरो बाय 2016 किंतु हो पारा नहीं ना सार्क एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड सर्विसेज जहाँ आम कहे साटीस फॉलोइंग द दैट इज गैट्स प्लस पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच द लिबरलाइजेशन सार्क यूनिवर्सिटी कौटी हम कहला इंडिया रे हम ये फूड बैंक हम एंड ऑल्सो एनर्जी रिजर्व इन पाकिस्तान देख ताले टू एस्टाब्लिश ए सार्क यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड फूड बैंक ये दुईटा इंडिया हम बोली प्रपोजल थिला आउ गोटे कौन हम ना एनर्जी बैंक हम कौटी एनर्जी रिजर्व हम पाकिस्तान रे तो ये थिला तुम सार्क किंतु सार्क आज पर्यटन लास्ट मीटिंग शायद प्रॉब्ली 2014 तो लास्ट सार्क मीटिंग सो जदि आम देख लास्ट इट वाज आम कहवा हो पारे नहीं आज पर्यटन है सेमती चलती तुम से 14 जहाँ मुझे कहती 2014 लास्ट बाकी है जहाँ भी हो देन आम आसवा ब्रिक्स पाखक आसवा दैट इज द व्हाट ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये भी गोटे तुम कौन दीज आर द डेवलपिंग कंट्रीज ग्रुपिंग ऑफ मेजर डेवलपिंग कंट्रीज दैट मीन्स जहाँ को आम कहवा ये के भी आसला देख 2006 ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना दीज आर द व्हाट जहाँ को आम कहवा डेवलपिंग कंट्रीज एमाने G8 आउटरीच समिट सेंट पीटर्सबर्ग रशिया 2006
latter it was came to force 2019 रे ना 29 sorry first BRICS summit ହେଇଥିଲା South Africa रे that was summit was held in what that is the Yekaterinburg Russia first तमर ହେଇଥିଲା कोठी माइनस साउथ आफ्रिका ओके ओके फास्ट जोटा सॉरी मत करेक्ट कर दियो फास्ट तुम रशिया रही मु भी कन्फ्यूज हो यार कौन ये तो रशिया रही कौन आफ्रिका से तुम आफ्रिका नाला एक्सक्लूडेड थी लैटर ऑन सी आड हम ठीक अच्छे तो दैट मीन्स आम फास्ट होता तुम 2019 रे सो दैट मीन्स इट केम टू एक्जिस्ट जी आम देखा इन 20 तुम 9 आसीगला 7 जो थे आफ्रिका फास्ट नाला लैटर अनुसार 10 रे आसीगला फुल मेंबरशिप होगा तो ग्रुपिंग होगा ब्रिक्स ता पूर्व केवल साउथ आफ्रिका नाला फास्ट सेशन रे देन साउथ आफ्रिका आसीगला देन तुम 11 रहा कौन साउथ आफ्रिका अटेंडेड द फास्ट ब्रिक्स सेशन चाइना रे अटेंड कला फास्ट इन साउथ आफ्रिका 2010 रे मेंबर है 2011 रे अटेंड कला सो 2014 रे आसला कौन दैट इज व्हाट फोटो लेजा डिक्लेरेशन जहाँ अंडर आसला तुम न्यू डेवलपमेंटल बैंक कौटी अच्छी तुम सांघाई जहाँ ब्रिक्स बैंक कह जाए देन आस 2015 रे उल्फा दैट इज द डिक्लेरेशन ब्रिक्स अडॉप्टेड 7th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन उल्फा जो थे कहगला रेंज ऑफ टॉपिक था जमती गुड गवर्नेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यहाँ भी तुमको पचारि पारे कारण ये बहुत इंपोर्टेंट जो तुम फोटो लजार डिक्लेरेशन बहुत इंपोर्टेंट तापर जदि आम देखा इंपोर्टेंट होची तुम दैट इज बट आम कह 7th सेशन हेल्ड इन उल्फा डिक्लेरेशन कौन देन तुम 13th सेशन अंडर द इंडियन चेयरमैनशिप वर्चुअल समिट होता ओके तो आम 2021 रे होता देन ये तुम तो थर्ड टाइम इंडिया होस्ट करता इंडिया 12 रे कर 16 रे कर 2021 रे कर देन 2022 अगेन बेजिंग रे होता है ना ये बेजिंग रे डिक्लेरेशन अडॉप्ट होता तापर तुम 15 सेशन आसो देन यूक्रेन वार चलेगा ओके दर कोऑपरेशन देन 15 समिट है एंड 15 मतलब साउथ आफ्रिका जोहान्सबर्ग ना आसला कौन कौन दैट मीन्स आम कह 2023 रे 2023 रे हूँ कौन 15 सेशन लेटेस्ट टॉक जोटा होता जो थे पुतिन मध्य जाई नथिले तो ब्रिक्स तुम देखी ब्रिक्स एक्सपांसन ना 2023 रे ब्रिक्स किसी नुआ डेवलपमेंट होती 6 जन नुआ मेंबर आड होती ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया ओके ना हु आर द 6 मेंबर इथियोपिया यूएई ईरान साउदी इजिप्ट सो दीज आर द 5 आ गोटे किए रहीगला अर्जेंटीना आ गोटे रहा कौन तुम अर्जेंटीना सो दिस 6 कंट्रीज नाउ एडेड इनटू द ब्रिक्स now that means it would be what BRICS plus 6 so then these are the new members okay applied देखो की करची so these are the countries applied for the BRICS membership so a new block is evolving then comes RCEP comprehensive regional economic pact of the partnerships जो थरा सूची तुम्हारा ASEAN plus 5 or equal to 15 countries the 5s are who नुआ countries Japan South Korea Australia New Zealand and China and who China so these are the 10 countries हमें देखी थी ASEAN plus 15 so these are the world largest trading bloc ताले ये होची कौन RCEP world largest trading bloc इंडिया निजो को बाहर कर देता इंडिया pulled it out in November 2019 because of its own what I would say personal issues like adequate safeguards and lowering the custom duties adversely impact करो इंडिया मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर से इंडिया तार कौन कह इंडिया कारण डेयरी सेक्टर तुम जान बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट देखिए रखी तो जेहेतु न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया डेयरी सेक्टर बहुत ही चीप तो आम मार्केट इंपोर्ट अधिक हो सो दैट आमर डेयरी मार्केट खत्म हो ओबियसली चाइना सहित आम ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी अच्छी तो आहरी बढ़ीज से जाणी शुणिकी बाहर रही तो जापान अच्छी साउथ कोरिया चाइना म्यांमार थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर कंबोडिया प्रोनॉय वियतनाम लाओस इंडोनेशिया फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दीज आर द कंट्री द वेस्ट दैट इज बट पैसिफिक कंट्रीज मैंने मिसिकी कर तुम कौन दैट इज द RCEP देन कम टू BBIN बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो थे भूटान निजको बाहर कर देती भूटान कहला कि यदि ये मतलब हाईवे बा एग्रीमेंट हम मतलब आम कह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करवा तार क्लाइमेट खत्म हम तार जो नेपाल को कहुए तुम जान कि जीरो और कार्बन ओनली कार्बन न्यूट्रल स्टेट इन द वर्ल्ड सो दैट सी चाहूनी निजर पॉल्यूशन को बढ़ाई से हटेदेला ना तुमको सारे ये BBIN रे कौन हम तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो थे कि गोटे बस बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश नेपाल भूटान चारिआडे जापर है ना सो दैट कौन रहा पैसेंजर पर्सनल कार्गो दैट इज व्हाट वेहिकुलर ट्रैफिक बिटवीन द बांग्लादेश भूटान ये सब भितर जापर
है ना एम्फासिस करिवे इंपोर्टेंस ऑफ द कोऑपरेशन हे परिबो तो ये थिला तमरो बट पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़िबो ट्रांसपोर्टेशन टा इजी हबो जेमति नेपाल गोटे कोन हम कहबा लैंडलॉक्ड कंट्री भूटान लैंडलॉक्ड कंट्री तो से मानको कोन एक्सेसिबिलिटी मिल जो कोस्टल लैंड लाइक हमें बीबीआईएन थ्रू रे किंतु एथरे कोन हला कि जो हमर भूटान निजको विड्रॉल कर दिछि बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देन कम्स टू बिमस्टेक the Bay of Bengal initiative of the multimodal sectoral technique and economic cooperation countries के देखिए थे बांग्लादेश Bhutan India Nepal Sri Lanka so that would be the 5 South Asian countries there are 2 South Asian countries are Myanmar and Thailand so these are the South Asian so Southeast Asian and Asian so there are how many countries that is 7 countries is that Bangladesh Bhutan Myanmar India Myanmar okay Thailand Sri Lanka, Nepal, India, Bhutan and Bangladesh. These are the countries are coming here. Okay. Now, kono objective kono objective jodi ame dekhiba what is the objective sovereignty or the sovereign equality territorial integrity political independence no interference in the internal matter peaceful coexistence mutual benefits so these are the objective and the principles jaako me kahiba then comes to what Indian Ocean Rim जाको हमें कहूँ IOR बहुत इंपोर्टेंट कारण इन तुमको एटा तुम कोठी लिखि परिबो जीएस पेपर 3 रे तुम लिखिबे ए जेते तुम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आसुची यू मे राइट इन पेपर 2 एंड पेपर 3 as well it would be best तुमरो पेपर 3 रे हेबो यूपीएससी रे पेपर 2 रे रहइबो ओके now comes to here Indian Ocean Rims Indian Ocean Rim India रो सबले टारगेट था कि इंडियन ओशन को सेफ्टी देबा सेफगार्ड देबा ता जो न्यूट्रल कंट्रीज अछि समन को सହିତ रिलेशन को इंप्रूव करिबा and to progress together okay so Indian Ocean Rim Association previously named as the Indian Ocean Rim Initiative also called as the Indian Ocean Rim Association for the regional cooperation ये तला तार शॉर्ट रे कहिबा ना इथरे रीजनल कोऑपरेशन रे कोन कोऑपरेशन करिबा ट्रेड टूरिज्म इकोनॉमी डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नेंस technological cooperation disaster management these would be things so that means हम कहबा investment पढ़िबा trade facilities cooperation these are the things currently 23 members are there formed 1997 okay the idea of OR was India and South Africa ये कोठो idea आस्तला by formed by India and South Africa दी जना को करथले ना Colombo declaration of Indian Ocean region plays to counter the drugs trafficking ये बहुत important कोलंबो रे जेतला मीटिंग हेतला इंडियन ओशन रीजन रे सेतलो कहले कि ड्रग्स को केमती हमें ड्रग्स फ्री करबा इंडियन ओशन को केमती डिक्लेयर करबा ड्रग्स फ्री जोन एथरे कमिटमेंट करा जायतला सेत में एटा बहुत इंपोर्टेंट सो दैट प्रत्येक नेशन जो माने कि इंडियन ओशन लिटरल कंट्रीज अछि दे विल टेक देयर ओन डिसीजन टू एलिमिनेट द ड्रग्स एंड रिलेटेड क्राइम्स इन एडिशन द फास्ट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द मेजर क्राइसिस the littoral countries India regularly engage in the Indian Ocean littoral countries and Indonesian Rim IOR and Indian Ocean that is Navy Symphonium एथरे कोन करे इंडिया अंडर दिस तो एटा ध्यान मार्क IOR अंडर कोन करे केतेटा प्रोग्राम আছে जेमति सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल रीजन एटा पचारछि बहुत थोर यूपीएससी मते पचारछि ताको टिके मन रखिबो देन जो इंडियन ओशन नेवी सिम्फोनीज एटा होछि गोटे जॉइंट नावल एक्सरसाइज अमंग द IOR कंट्रीज फॉर द रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी पे करती ठीक अच्छे तो इंडियन ओशन रीजन कहले इंडियन ओशन चारिपटे जिते भी हम कंट्रीज अच्छी दोज कंट्रीज शेयर द बाउंड्रीज दे विल कम टुगेदर टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट हाउ टू कीप द चाइना आउट फ्रॉम द इंडियन ओशन मस्ट बी हैविंग द होल्ड ऑफ इंडिया एज वेल तो ये थिला तार ऑब्जेक्टिव नाउ आसबा गल्फ काउंसिल आको मते यूपीएससी आपनकर क्वेश्चन पचाछि गल्फ काउंसिल कोन पई के कंट्री अछि केबे आसीथिला तो गल्फ काउंसिल बहरीन कतार Oman, Kuwait, Saudi Arabia, UAE. The chief of the Gulf Cooperation Council's main headquarters, Riyadh, Saudi Arab. के बेस थला तुमरो 1981 हना या से थला तो तांका पत्र कोऑपरेशन करे एथरे किए नहीं ईरान नहीं दो द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन दिस रीजन बट दैट इज एक्सक्लूडेड दैट मीन्स हम कहबा केवल गल्फ ऑफ पर्शियन रो सदर्न साइड को निया जेते देन G20 मीटिंग ऑलरेडी दिल्ली रे चलची अंडरगोइंग मीटिंग जो बाइडेन आसी पहुंच जाई छंती G20 कौन द ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करे द टॉप 20 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड देयर सिग्निफिकेंस कौन हाउ टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी को केमिति ट्रैक को आनिबा हाउ टू ब्रिंग द इकोनॉमी इनटू द ट्रैक टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड to formulate the global policies related to the trade
health, climate change, economic crisis. But basically G20 focuses economic related things. जमती केमती लेट्स से ग्लोबल डिमांड हैज डिक्रीजेस तापरे ग्लोबल इन्फ्लेशन कथा नहीं जाओ, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कथा नहीं जाओ, ग्लोबल पॉलिसीज कथा नहीं जाओ, ट्रेड पॉलिसीज. Okay, they represent what 80% of the global output and accounting 75% of the global export, 60% of the global population. Can you imagine how much important this organization? 80% of the global economic output, 75% of the global export, 60% of the global population. That means this organization is one of the most strongest organization ever this earth is having, and India is worthy, and India is what happy to conduct the happy to have the presidency of G20 2023 is being conducted in New Delhi in the Pragati Maidan. One nation, one earth, one family. Okay. G20 रे जति आमे देखिबा that means इते आपूर्व इंडोनेशिया हेतिला, जाकर्ता रे हेतिला, बाली रे sorry it was in Bali. Now G20 summit in Delhi. The one earth, one family, one future जोटा कि हमरो रहिछि थीम रहिछि ताको करछि. The G20 president India करूछि more than 200 meetings across the 32 various locations throughout the country organize कराउछि. देखो more than 200 meetings under the G20, 32 places करा जाइछि. थीम कोन one earth, one family, one future. That is Vasudeva Kutumbakam, reflects India's raw unity, equality, and transcending the distinction between the first and the third world. Ko khatam kariba. India will actively work towards the building international agreement and reforming as well. So ethre kono kariba in that is multinational organizations like UNA contributing for the new world and the post COVID time re kono karichi. Na India ra kono presidency jodi emphasis is the life style for the environment represent करे बहुत important life emphasis the lifestyle for the environment, advocating environmental sustainable choice and the individual lifestyle and national development. अमृत काल चलछि already तमने जानिछ. The next as well that means G20 रे इंडिया निजरो शोकेस करबो निजर टैलेंट तार इंफ्रास्ट्रक्चर तार इकोनॉमिक रो स्ट्रेंथ तार गवर्नेंस तार टेक्नोलॉजी तार यूपीआई पेमेंट सिस्टम तार कोविड मैनेजमेंट तार टेक्नोलॉजी तार सेरम इंस्टीट्यूट. These are the things India is going to showcase. ISRO successful event of the ISRO's management, population, politics, democracy, that to be showcased. Diversity. Now North Atlantic Ocean Treaty and NATO. Now it was 1948 Belgium, Netherlands. Sign Hitler Brussels Treaty. This is also called as the Brussels Treaty. It's a security organization. KK Luxembourg, France, United Kingdom consider to the procedure to the NATO agreement एमने करथिले. वर्तमान में देखबा देन अटलांटिक ट्रीटी वाज साइन इन वाशिंगटन डीसी 1949. ता द्वारा कोन हैला गोटे मिलिटरी अलायंस. ए गोटे होची मिलिटरी अलायंस. जदि ये मेंबर कोनसी मेंबर को के अटैक करछि बाहर मेंबर देन इट वुड बी अमाउंट टू अटैक टू द ऑल मेंबर्स. एथरे के होची देखो ब्रसेल्स, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, पोर्तुगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड. एवे तमरा ग्रीस एंड टर्की has also joined. एमने मते join कर देछि. Finland recently joined करछि by apprehending the Ukraine war. Okay, Finland, Sweden applied for the NATO memberships. The Finland already joined करि सारिछि. The Finland became the 31st member of the NATO. तेटे टिके मन पकबो Finland. The Finland became the 31st member of NATO. Ukraine, here is the what that is Ukraine has applied for that. Ukraine मध्य NATO रो membership पई पकईची. नाटोर जदि तुम खाली नाटो पढ़िया चाहूच मोर गोटे वीडियो अच्छी से जाकि देखीदेव. नाटोर फॉर्मेशन तार आर्टिकल्स तार कंडीशन सब दिखाई. हेडक्वार्टर कौटी अच्छे ब्रसेल्स. अलायंस कमांडर ऑपरेशन मून्स बेल्जियम. स्पेशल आर्टिकल 5 ऑफ नाटो कौन हुए जदि कौन मेंबर जड़े नाटो मेंबर को अटैक करुचे दैट वुड बी अमाउंट टू अटैक ऑल द मेंबर. तेणु सब मेंबर मिसिकी अटैक करेंगे से देश उपर. फॉर एग्जांपल रशिया. देन कम्स टू द G7 द मोस्ट इंपोर्टेंट and the important countries Canada, France, Germany, United States, United Kingdom, Japan and Italy. plus 1 करदेले G8 थिला. प्रथम थिला G7 तापर हैला G8 रु रशिया को हटे देले केबे 2014 रे पुनी हे गेला G7. ओके तो ये रहबो तमरो रैपिड रिवीजन. ना ये हैला ग्रुप 7 कंट्रीज इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम जो थरा छी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए. हाँ ना ये मैंने हो वर्ल्ड टू लार्जेस्ट IMF एडवांस इकोनॉमीज एंड वेल्थिएस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज. 2022 रे कलेक्टिव ग्रुप समिति का 50% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ
and 770 million people, 10% of the world population एठी रहउची. ओके, दैट मीन्स हमें कहबा 2022 रे जर्मनी प्रेसिडेंसी करूथिला. इंडिया मध्य सेठिरे जेतले इनवाइट हेतले है ना, इंडिया को इनवाइट करा हेतला, तो इंडिया मध्य जाइथिले. तो जदि हमें G20 कथा कहबी कि जी आ पूर्व G8 थिला कि 2013 रे जेतले क्रीमिया को मिसेइथिला रशिया सेतले ताको बाहर करदेले. देन कम्स टू OECD. OECD हमें कहबा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ द 38 कंट्रीज. OECD रो हमें देखिबा कोठी, दैट मीन्स OECD रे हमें देखिबा कोन होची द यार देखो OECD तुमको पचारे कोन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 38 कंट्रीज. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल डिटेल्स among the signatories countries to check tax evasion. This is very important. कोन tax evasion को केमिति कमाजिबो. 108 jurisdictions, 79 jurisdictions sending the informal ये तुमरो रहइबो. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं टिके फास्ट कहबी और टिके जल्दी जल्दी कवर करबा पे चेष्टा करी, तो आपण मन को टाइम को बचेबी. सो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड सजेशन. विथ दिस, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू ऑल.